Hi, this is Nak's mom. My son is studying here in LM school, and through this school I've got this amazing opportunity to take part in this Kalams world record. Through this thing we are going to teach our kid about peace in a very fun method. So I'm very excited and looking forward to it. मेरा नाम रुचिता है, मैं दिवित की मॉम हूँ। मेरा बच्चा लिटिल मिलेनियम स्कूल में पढ़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ स्कूल में बच्चे को भेज के। मेरा बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है। मैं अभी कलाम रिकॉर्ड के बारे में बोलना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी मेरा बच्चा रिकॉर्ड के लिए पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छा उन लोगों ने, टीचर और बच्चों ने मिलकर किया था। इस बार पेरेंट्स और बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमको ये अवसर मिला है। व्हेन पेरेंट्स एंड बच्चे साथ में कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी। बच्चों को पता चलेगा अबाउट वर्ल्ड पीस क्या है, वॉर्स हो रही है, सो दे विल नो इट एट दिस स्मॉल एज। उनको छोटी सी उम्र में ये सब पता चलेगा। सो वी आर वेरी थैंकफुल। मेरी बेटी का नाम रियांशी है, वो लिटिल मिलेनियम स्कूल में पढ़ती है। हम लोगों को फर्स्ट टाइम ये देखने मिलेगा अब्दुल कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड। छोटे बच्चों को इतने छोटे एज में उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वी आर वेरी हैप्पी। हमारे बच्चे पीस के बारे में जान पाएंगे एंड वी आर ईगर टू पार्टिसिपेट इन दिस। थैंक यू। We are thankful to Little Millennium School for giving this opportunity. Thank you. Thanks to Kalam's World Record. So hi, this is Charanya from Little Millennium Sowcarpet. I'm the franchisee head, and she is Mrs. Priya. She's our academic coordinator from Little Millennium Preschools. And I would like to talk about the center, which is 15 years old, and this center has been operational past 15 years. And we have chosen this concept of a world record on sponge dabbing activity by our little ones. We have children below 5 years of age, and they are performing on world peace symbol.
they're doing the activity on a world peace symbol. So why we chose the activity, Purna ma'am will say. Yeah, thank you, Charanya. So hi, I'm Purna, and this is, our children doing a sponge dabbing activity towards world peace. So, this is our effort. We want to, teach children the importance of peace and why, each child has to, work on the sustainable development goals to help for world peace. And we are doing this use a sponge dabbing activity because, the sponge dabbing helps in the development of the fine motor muscles, and it actually, helps in developing good handwriting. So, we have our children who are very enthusiastically done the event today, and this is a really opportunity for them. Thank you, ma'am. And this is broke on a record 24 by 24 square feet of space. So we have created a world peace symbol. Thank you so much for the opportunity to Kalam world record. Thank you, Mr. Pumaravel, for this opportunity and witnessing our grand event. Thank you for watching. Consider subscribe our channel Kalams World Records and click the bell icon. Like, comment down and share.